Hello students, welcome to Supergrads channel. I am Akanksha and today this video is going to be really important and interesting because आज का जो कॉलेज है जिसके बारे में हम देखने वाले हैं it is a very very important college और अभी ये कॉलेज बहुत ज्यादा बूम में भी रहा है because of various reasons and those reasons will be also seen in this particular session. Shahid Sukhdev College of Business Studies is the college, as you can see in the background also, that we are going to talk about today. So, it is going to be really interesting. So, I really hope that you stick throughout the video and let's begin. So, students, before we move forward and talk about all the aspects around Shahid Sukhdev College, हम देख लेते हैं कि हम किन किन चीजों के बारे में इस पर्टिकुलर सेशन में बात करने वाले हैं. So we are obviously going to look into the about the college के बारे में थोड़ा सा जानेंगे हम. उसके बाद moving forward we'll be talking about the programs that is offered UG programs basically which is offered by Shahid Sukhdev College and admission process कैसे admission करते हैं पहले कैसे admission होता था और आज current scenario में कैसे admission होता है. Eligibility criteria हम लोग देखेंगे for all these UG programs. फीस स्ट्रक्चर देखेंगे. अच्छा, प्रोग्राम्स के अंदर वी आर ऑल्सो गोइंग टू लुक इनटू द सीट मैट्रिक्स, सीट्स इनटेक कितनी है इन द रिस्पेक्टिव programs, and then later on we'll talk about the fee structures of these respective programs and we'll be concluding with in UG programs को pursue करने के बाद what all career options do you have after you finish this program or once you have the degree of this college. So without any further ado, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉलेज के बारे में. कॉलेज के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी एक बार देख लेते हैं. सो एज यू कैन सी इन द बैकग्राउंड, so Shahid Sukhdev College is one of the very renowned college affiliated to Delhi. It was established in 1987 और जैसा कि मैंने कहा दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है. दिल्ली यूनिवर्सिटी का काफी खास जाना माना कॉलेज है एंड इंडिया टुडे ने इसको रैंक 1 किया है among the various management institutes in our country. और इसके रीजंस भी हम लोग देखेंगे why थ्रू आर वेरियस प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स. जो इस प्रोग्राम्स को परस्यू करके बच्चे प्लेस होते हैं तो उनके प्लेसमेंट्स डेटा भी हम लोग देखेंगे. एंड मैनेजमेंट स्टडीज, जैसे मैंने आपको बोला कि मेजरली जो 3 कोर्सेज हैं वो आते हैं कैटेगरी 2 डिपार्टमेंट्स के अंदर. एक तो मैनेजमेंट स्टडीज हो गया, दूसरा कंप्यूटर साइंस. मैनेजमेंट स्टडीज के अंदर देयर आर 2 प्रोग्राम्स एंड कंप्यूटर साइंस के अंदर देयर आर 1, सो व्हिच मेक्स टोटल ऑफ 3 programs under UG which is catered by or which can be catered through Shahid Sukhdev College of Business Studies. So let's move forward और इन programs के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देखते हैं. So as you can see, the first program, there are 2 programs as I already mentioned under management studies. First is BBA FIA. So BBA FIA, as you can see, बीबीए आप लोगों को सबको पता है यूजी का मैनेजमेंट में परस्यू करने का बहुत ही ज्यादा रिनाउंड प्रोग्राम है, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. बट यहाँ पे दे डू नॉट प्रोवाइड प्लेन और ऑनर्स. बीबीए प्लेन या बीबीए ऑनर्स प्रोवाइड नहीं करता है शहीद सुखदेव. It provides you a program under BBA FIA, which is Financial Investment Analysis. तो ये प्रोग्राम फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जिनका कोर या फिर जिनको इंक्लिनेशन है टूवर्ड्स फाइनेंस. सो एवरीबडी हु वांट्स टू मूव इनटू फाइनेंशियल सेक्टर और फाइनेंस की तरफ एज है, फाइनेंस एज अ डिपार्टमेंट या फाइनेंस एज अ इंडस्ट्री फॉर दैट मैटर, वो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं तो दिस प्रोग्राम इज द परफेक्टली सूटेबल प्रोग्राम फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स. एंड moving forward, BMS is the second program which can be pursued under management studies by Shahid Sukhdev, bachelor's in management studies. So it is equivalent to what you usually get in BBA. बहुत ही छोटे से distinctions होते हैं जैसे कि the variations or the specializations that you get to see usually in BBA gets a little bit wider in BMS, which is bachelor's in management studies. Everything apart from this is same. मैनेजमेंट के सारे कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ते हो, आप इनके स्पेशलाइजेशन एज आई ऑलरेडी मेंशन पढ़ते हो जैसे कि ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंस, मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हो एंड एक्सेट्रा. एंड लास्टली एज यू कैन सी इज
BSc honors in computer science, it is, as it can be ascertained from the name itself, for all those students who have an edge for computer science, this can be the best suited program for you all. Now, students, moving forward and talking about the seat matrix and the seat intakes of these three UG programs, starting with, as you can see, BMS is a program which will give you total of 232 seats intake, which obviously further gets bifurcated into the various categories. As you can see, 35 for SC, 17 for ST, OBC के लिए 63, EWS के लिए 24 and the remaining 93 for general category. और BBA FIA की अगर हम बात करें तो there is total of 113 seat intakes. Likewise, it gets bifurcated into general, SC, ST, OBC, EWS, 45 for general, 17 for SC, 8 for ST, 31 for OBC, 12 for EWS, and lastly, 57 seat intake for computer science, BSc honors in computer science, 23 total seats in general, 9 in SC, ST में 4, OBC 15 and 6 in EWS category. So this is the whole seat structure and seat matrix that you needed to know. काफी अच्छी seat intake है. तो for everybody जो या तो BMS, BBA या फिर कंप्यूटर साइंस परस्यू करना चाहते हैं, आई थिंक दिस इज द बेस्ट सूटेड. और क्योंकि सीट इनटेक काफी अच्छी है, आई थिंक यू शुड गिव इट अ गो. एडमिशन प्रोसेस अभी हम विल सी इन आवर अपकमिंग स्लाइड. ना स्टूडेंट, सीट इनटेक तो हम लोगों ने देख लिया, बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आप लोगों के दिमाग में हमेशा से रहता है, फीस स्ट्रक्चर क्या है इसकी. सो सिंस इट इज अ दिल्ली यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड कॉलेज, तो फीस हमारी बहुत ज्यादा नहीं होती है, एंड ऑब्वियसली इट ऑल्सो गेट्स बाइफरकेटेड फॉर वेरियस अदर कैटेगरीज. पर इस पर्टिकुलर स्लाइड में वी हैव टेकन जनरल कैटेगरी की फीस ही. तो एज यू कैन सी, ये अप्रोक्सीमेट फिगर्स है इन द स्लाइड, एज यू कैन सी. सो फॉर बीबीए फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड एनालिसिस, आपको जो फीस है टोटल ऑल फॉर ऑल द, अच्छा वन मोर थिंग, आई होप दैट यू नो, आई नो दैट यू ऑल नो कि इन तीनों प्रोग्राम्स का जो ड्यूरेशन होता है, इट इज 3 years फॉर ऑल दीज थ्री. एंट्रेंस बेस्ड होता है. एडमिशन प्रोसेस, एज आई सेड, विल बी इन माय नेक्स्ट स्लाइड. सो 3 years, ऑल दीज 3 years, जो हमारा अप्रोक्सीमेट फिगर होता है फॉर बीबीए FIA is 67,565 for all these 3 years, 34,565 for BMS, which is Bachelor's in Management Studies, BSc in Computer Science, 79,565. Now, students, a very important slide and a very important factor that we all needed to know is the admission process for all these programs, the 3 programs, UG programs that we just talked about. तो जैसे आप लोगों को पता है that earlier there was some different process to get into or take admission into Shahid Sukhdev College, and now the whole process has been changed. There has been an upgradation, major upgradation in the version of the entrance test and the admission intake into Shahid Sukhdev College. So talking about till 2021, जो पहले एंट्रेंस कंडक्ट होता था जिसके थ्रू आप शहीद सुखदेव में एडमिशन लेते थे, वाज DUJAT. DUJAT इज दिल्ली यूनिवर्सिटी जॉइंट एडमिशंस टेस्ट. ये टेस्ट देना वाज वेरी मच मैंडेटरी. मतलब इसी टेस्ट को देके आप शहीद सुखदेव में एडमिशन ले सकते थे फॉर ऑल दीज 3 प्रोग्राम्स. एंड ये जो है दिल्ली DUJAT, इट वाज there till 2021, और अभी इसी साल से this has been scrapped बोल दीजिए या फिर integrated बोल दीजिए, whatever you prefer, but DUJAT does not exist anymore. Why? Because now the entrance which has taken over all the other entrances or integrated the other entrances is CUET, which is Common Universities Entrance Test. I know most of you already know about it because it has been in a boom since past couple of weeks. इसके एंट्रेंस भी शुरू हो चुके हैं 15th of July से, और फर्स्ट फेज इज ऑलमोस्ट ओवर, सेकेंड फेज विल बिगिन इन अगस्त. तो अब जो प्रोसेस है, इट इज CUET का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रॉम DUJAT. सो DUJAT ओनली कंसिस्टेड ऑफ few top colleges which provided the programs into management studies, जैसे कि BMS या BBA FIA,
और सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज केटर करता था, बट नाउ चीजें थोड़ी सी अपग्रेड हो गई है. एज आई सेड, CUET के थ्रू अब एडमिशंस लिए जाते हैं, एंड नाउ ओवर 80 यूनिवर्सिटीज हैव इंटीग्रेटेड अमंग्स themselves, and there will be only one प्लेटफॉर्म बोल लीजिए या फिर वन एंट्रेंस बोल लीजिए टू गेट एडमिशन इनटू एनी ऑफ दीज 80 यूनिवर्सिटीज, एंड दैट इज थ्रू CUET, विच इज कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेज हैं वो सब, इनमें से दिल्ली यूनिवर्सिटी की जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है तो CUET आपको देना पड़ेगा. इसका पैटर्न की अगर हम बात करें, टेस्ट पैटर्न की अगर हम बात करें, तो एवरीबडी नोज, बट देन लेट्स बी very much clear, have a clarity over the entrance ka pattern also. Section 1 is language, section 2 is domain, and section 3 is your GT, which is general test. ये तीनों सारे यूनिवर्सिटीज की और उनके रिस्पेक्टिव प्रोग्राम्स की क्राइटेरिया चेंजेस और डिफर्स व्हेन यू कीप चेंजिंग द यूनिवर्सिटी एंड द प्रोग्राम्स का कॉम्बिनेशन. So for these three, हम लोग in my coming slide let us look into कि इन तीनों programs का criteria, admission criteria क्या बोलता है. So as you can see, BBFIA की अगर हम बात करें, so the duration as I said is 3 years. So the eligibility criteria says that the student must pass intermediate graduation with 60. Intermediate graduation का मतलब यही है 12th पास होना जरूरी है with at least 60% of marks. Now 60% of marks is what for the general category that we are expecting. अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना मिनिमम एलिजिबल परसेंटेज, एग्रीगेट परसेंटेज आउट नहीं किया है 12th का, बट ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, एजम्पशन है कि 60% तो शायद लेगी ही मिनिमम. देयर विल बी नो वेटेज ऑफ 12th, तो देयर विल बी नो सच प्रेशर कि आप लोगों को 90% से ऊपर 99% लेकर आना है. देयर विल बी नो सच प्रेशर. So minimum 60 that we are expecting from Delhi University. और जो आपको कॉम्बिनेशन चूज करना पड़ेगा टू फॉर एवरीबडी who wants to pursue BBFIA will be मैथ्स लेना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब लेना भी, एंड हैविंग मैथ्स इन योर 11th और 12th. 11th 12th पे यहाँ पे आपके पास मैथ्स नहीं है, तो ये वाला पर्टिकुलर प्रोग्राम और फॉर दैट मैटर BMS बोथ रिक्वायर साइंस, कंप्यूटर साइंस ऑल्सो, बट अगर मैनेजमेंट स्टडीज की बात करें तो BBFIA BMS बोथ डिमांड्स टू फॉर यू ऑल टू हैव मैथ्स इन योर 11th एंड 12th. अगर नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे, बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बहुत साफ साफ शब्दों में कहा है कि आपको मैथ्स में, हमारा डोमेन में मैथ्स में तो पेपर देना ही पड़ेगा, और सारा सिलेबस 12th का है, तो यू मस्ट हैव मैथ्स इन योर 12th. ओके, सो मैथ्स इज कंपल्सरी. वन लैंग्वेज, सेक्शन 1 में से एक लैंग्वेज चूज करना है, एंड जनरल टेस्ट, ये तीनों चूज करना कंपल्सरी है फॉर यू ऑल टू pursue or to be eligible for Delhi University Shahid Sukhdev College of Business Studies to pursue BBFIA. Talking about BMS, same 60% as if we are expecting. Maths, one language and general test, same likewise. And then for BSc Honors in Economics, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है. इट सेज मैथ्स तो कंपलसरी है, एक लैंग्वेज भी कंपलसरी है, बट एनी टू डोमेन ऑफ योर ओन चॉइस. आपके 12th में 5 सब्जेक्ट हैं अगर, तो 5 में से मैथ्स को छोड़ के जो भी बचा, और इंग्लिश को छोड़ के, तो उनमें से कोई से भी 2 आप अपनी चॉइस के चूज कर सकते हो. सो दिस इज द जनरल टेस्ट फॉर कंप्यूटर साइंस इज नॉट मैंडेटरी एट ऑल. सो इवन इफ यू डोंट चूज इट, आप मतलब जरूरत ही नहीं है तो चूज करना ही नहीं चाहिए. शायद माई सजेशन विल बी दैट until and unless you are not choosing any other program. So this is the eligibility criteria for all these 3 programs for you all who will be or are applying or have already applied for Common University's entrance test to get admission into Shahid Sukhdev College for Business Studies. Now students, as you remember that abhi 2 minutes ago itself, I mentioned that Shahid Sukhdev College has been ranked 1 among the management studies institutes all around our country by India Today. The reason is very prominent behind my back. It's beautiful placement records.
अपने प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स और अपने एकेडमिक स्टडीज को करिकुलर एक्टिविटीज के लिए ही जाना जाता है शहीद सुखदेव. एंड द प्लेसमेंट डेटा दैट आई हैव हियर इज द रीजन दैट कुड अट्रैक्ट यू to pursue your BBA, FIA, BMS, or computer science from Shaheed Sukhdev. So as you can see, average package अगर हम देखें, so 8.30 lakh per annum, which is not seen in any other college. If you are pursuing UG program के बाद, all those students जिनको interest है to have a working life or to have a taste of the corporate life, जिनको job करना है, उनके लिए this college is the best because it gives you the best companies with best placements. Highest हमारा जो पिछले साल गया था, it was 19.25 lakh per annum. अगर हम लोग टॉप 100 स्टूडेंट्स विच गॉट प्लेस्ड, उनका एवरेज अगर देखें तो 11.18 lakh per annum. So you just have to make your academic record strong, you have to make your co-curricular record strong, and you also are going to get these beautiful placements once you get into Shaheed Sukhdev College. And offers जैसे अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, so the number of students who got placed were above 200, and average package of the eliminative companies, eliminative मतलब the companies which exclusively come into Shaheed Sukhdev College, and the companies which are renowned all over the country and in the world also, उनका जो average package था was 10.93 lakhs per annum. So as the record also says, best institute for academic, co-curricular as well as placements. So students, concluding our session with what opportunities or what job offers, what job careers can you have once you pursue द मैनेजमेंट स्टडीज के यूजी प्रोग्राम्स. कंप्यूटर साइंस आपको पता है फॉर एवरीबडी, अगर आपको अपना फ्यूचर कंप्यूटर साइंस में बनाना है, सॉफ्टवेयर में टेस्ट है, सो डेफिनेटली वहां पे भी काफी बूम और डिमांड है ही. बट मैनेजमेंट स्टडीज की अगर हम बात करें, बीएमएस, बीबीए, एफआईए की अगर हम बात करें, सो एज यू कैन सी, career in mutual funds and insurance sector. So mutual fund insurance sector is one of the very essential part of the financial industry. Any financial company, तो आप वहां पे अपना जॉब सिक्योर कर सकते हो, अपने करियर को और ज्यादा you can take it forward. Talking about the next career growth can be investment banks and capital market, as I already said. Mutual funds, insurance sector, investment sector, capital market, money market, everything is a part of a financial industry. You can, find out or figure out your own taste and go further into that. जो बच्चे सीए करना चाहते हैं उनके लिए भी बीएमएस और बीबीए, एफआईए स्पेशली इज अ बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे आपको अकाउंटेंसी फाइनेंस का कोर मिलता है, विच यू गेट टू ऑल्सो स्टडी फॉर इफ यू वांट टू परस्यू और इफ यू वांट टू बिकम अ सीए, उस चीज के लिए तैयारी करते हो तो उसके लिए भी दिस प्रोग्राम बीबीए एफआईए स्पेशली इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल. एंड लास्टली, मास्टर्स इन फाइनेंस, जो अपनी फर्दर स्टडीज परस्यू करना चाहते हैं, मास्टर्स करना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं फॉर दैट मैटर, उनके लिए भी ये डिग्री बेस्ट है, स्पेशली इनटू फाइनेंस. बीएमएस की अगर हम बात करें तो बीएमएस में भी मास्टर्स कर सकते हैं आप. यू कैन फाइंड योर ओन स्पेशलाइजेशन अमंग एचआर और मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशन, फाइनेंस तो है ही. So these are the specialization from BMS, and this is how you can figure out how actually you can move further in your career. So students, this was all from my side, and I hope that everything that we discussed about Shaheed Sukhdev College of Business Studies throughout the video was helpful to you. And if it was, do not forget to like, share, and subscribe. And if you have any further queries, you can always connect with us via the given information. Thank you. Take care. Bye-bye.